today's lecture in chemical thermodynamics, we are first going to see the types of system. The first one is open system, second one is closed system, third one is isolated system. We can have fourth one, that is homogeneous system. And heterogeneous system. The fifth one is heterogeneous system. Now, what is an open system? The system in which both energy as well as matter is exchanged with the surrounding is called as open system. A closed system, the system which can exchange energy but not the matter with the surrounding, is called as a closed system. What is isolated system? The system which neither exchanges energy nor the matter with the surrounding is called as isolated system. But there is no perfect man-made isolated system. And the only example of an isolated system could be the universe, our very own universe, which does not exchange energy as well as matter. Now we'll see in details with examples. Again, open system, as I said, which exchanges both energy as well as matter with the surrounding. What could be the example? Hot boiling water kept in an open vessel. सपोज एक खाली बर्तन है, आप उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन उसमें गरम गरम उबलता हुआ पानी रखा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हीट विल बी ट्रांसफर्ड, तो एनर्जी ट्रांसफर हो गया. और दूसरी बात, बिकॉज इट इज केप्ट इन ओपन, है ना, तो ऑब्वियसली द मैटर थोड़ी देर बाद पानी भी कम हो जाएगा. सो इट इज एक्सचेंजिंग बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग. क्लोज सिस्टम एक्सचेंजेस व्हाट? एनर्जी बट नॉट द मैटर विद द सराउंडिंग. जैसे हॉट बॉइलिंग वाटर केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल. बर्तन लिया, इसमें पानी रखा, उबाला, लेकिन अभी ढक्कन रखा है, तो वेपर्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप, तो मैटर उतना ही रहेगा लेकिन हीट एक्सचेंज होगा, तो क्लोज सिस्टम हो गया. आइसोलेटेड जैसे मैंने कहा, इट नाइदर एक्सचेंजेस एनर्जी नॉट द मैटर विद द सराउंडिंग. लेकिन ऐसा कोई भी परफेक्ट मैन-मेड आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है ना. यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन वो मैन-मेड नहीं है. वी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स. We know the law of conservation of mass and energy, which says that mass, the total mass and energy of the universe remains constant. इसका मतलब अपना यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के बाहर जो कुछ भी है उसके साथ न मास न एनर्जी कुछ भी एक्सचेंज नहीं करता, तो मतलब वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया. The fourth system is homogeneous system, the system which is uniform throughout and which has a single phase. Phase means physical state. It is called as homogeneous system. And a uniform throughout, the example would be milk in water, and you can see it is uniform throughout, even though there are two substances mixed. Ultimately, वो एक ही दिखता है. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि milk and water they homogeneously mix, correct? Or which has a single phase uniformly. जैसे a pure solid, any pure liquid or any pure gas. इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है. A single pure solid liquid or gas which has a single phase physical state, it comes under homogeneous system. Then heterogeneous system, the system which has more than one phases and which is not uniform throughout. The example for a heterogeneous system can be sand in water. Now sand is solid, water is liquid, so it has more than one phases and it is obviously not uniform throughout. करेक्ट ना. ऑयल इन वाटर में दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन मिक्स होने के बाद वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं है. तो सिस्टम शुड नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड और इट शुड हैव मोर देन वन फेजेस. या सपोज इसमें अगर हम लोग अलॉय लेते हैं, मेटल अलॉय, तो ये होमोजेनियस हो जाएगा, करेक्ट ना, क्योंकि मेटल अलॉय में सिर्फ दिखने में एंड में सिर्फ एक ही ये दिखता है. या सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोडियम क्लोराइड वैसे तो सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, लेकिन मिक्स होने के बाद वो एक ही फिजिकल स्टेट लेता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो वो होमोजेनियस में आएगा. So these are the main 5 types of systems. The next point is properties of system. There are two properties. One is intensive properties and the other one is extensive property.
let's see the definitions of intensive properties and extensive properties. Properties of the system. The first one is intensive property. This is the definition as you can read. It is a property of the system of which the magnitude is independent of the amount of the matter present in the system. These words are important, right? And easy to remember. Independent, the spelling starts with IN. Intensive, the spelling starts with IN. So in short, you can remember that intensive properties are independent of the amount of the substance, right? Spelling का similarity याद रखना. उसके examples दिए देखो. Temperature, density, viscosity, refractive index, melting point, boiling point, specific heat. है ना, सिर्फ समझने के लिए थोड़ा इसमें से easy property ले लेते हैं, जैसे boiling point, वो independent of the amount of the substance है, correct है ना? Let's say for an example, if I happen to heat 1 liter of water, it will boil at 100 degrees Celsius if it is pure. Now instead of 1 liter, if I boil 5 liter, it will still boil at 100 degrees Celsius. Correct now? So even if I change the amount 1 liter to 5 liter, the boiling point does not change. That means it comes under intensive property. The properties of the system, the second property is extensive property. It is the property of the system or of a system of which the magnitude depends on the amount of the matter present in the system. Intensive properties are independent of the amount. Extensive properties obviously depend upon the amount of the substance present in the matter. A few examples like mass, volume, internal energy, heat capacity, etc. Right? Now we need to understand, in details. There is a synopsis as far as intensive properties and extensive properties are concerned. I'll give you some extra information now. For the properties of the system, I'm giving you extra information. Very important one in this. The first one is, remember, extensive property, that is unit extensive property upon unit extensive property I'm writing a short form here, becomes an intensive property. It no longer remains an extensive property. The best example would be density, which is unit mass upon unit volume. Correct? Or you can say that EMF. E here is actually EMF. Right? Potential. It is basically minus delta G upon NF. Correct? Now, जिसमें ये डेफिनेटली एक्सटेंसिव है, ये पूरा एक्सटेंसिव है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? दिस विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन यूनिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. इवन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, लाइक मोलैरिटी. Molarity is number of moles upon volume. So extensive upon extensive becomes intensive property. One more point here, any physical property intensive हो या extensive कैसे पहचानने का? Any physical property with unit such as per gram, per decimeter cube, per mole, etc. is taken as an intensive property. करेक्ट ना? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. ना, जब आप पर ग्राम, पर डीएन क्यूब या पर मोल बोल रहे हैं, मतलब यू आर फिक्सिंग द अमाउंट, और अमाउंट एक बार फिक्स हो गया ऑब्वियसली, तो फिर उसको क्या काउंट करना चाहिए? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. समझ में आता है? लेट्स सी द डेफिनेशन फॉर हीट कैपेसिटी एंड वेदर the question is, this is intensive or extensive? A heat capacity, it is
the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree. तो ये इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव होगा? ये ऑब्वियसली एक्सटेंसिव होगा, it depends on the amount of the substance. So ये this whole property will be extensive property. करेक्ट है? जैसे मान लो कि आपके पास 1 लीटर वाटर है ना, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से बढ़ाने का है, तो आपको कुछ हीट लगेगा. लेकिन 1 लीटर की जगह पे सपोज 1 मिलियन मतलब 10 लाख लीटर्स वाटर है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा हीट लगेगा उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए. सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज हीट कैपेसिटी. लेकिन इसके जो टाइप्स आते हैं दैट कम्स अंडर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, उसका भी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ. इसका टाइप है सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी हो गया जो एक्सटेंसिव है. मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of a system by 1 degree. अब यह है ना 1 mole, तो आपने अमाउंट फिक्स कर दिया है. सो दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज द अमाउंट इज फिक्स्ड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट. है ना, क्योंकि वो पर मोल हो गया ना, अभी आपको सिखाया पर मोल हो जाएगा तो कैलोरीज पर मोल, जूल्स पर मोल. सो दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. थर्ड इसमें आता है स्पेसिफिक हीट, है ना. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वही स्पेसिफिक हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of a system by 1 degree. इधर भी अमाउंट फिक्स हो गया, तो इवन स्पेसिफिक हीट शुड बी व्हाट? एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना. दिस इज पर ग्राम, तो पर मोल, पर ग्राम, पर मोल, है ना. ये फिक्स हो गया तो ये इंटेंसिव हो गया. तो इसके टाइप्स है. करेक्ट. हीट कैपेसिटी से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट वैलिड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. ये फ्यूल का होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सभी के लिए होता है ना. व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दिस? ये it is the amount of heat generated during burning of 1 gram of the fuel. पेट्रोल, डीजल जिसका भी, अभी यहाँ पे भी मास फिक्स हो गया है ना. तो कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. समझता है? और पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू डीजल से ज्यादा होता है, क्योंकि पेट्रोल के 1 ग्राम जलने पे ज्यादा हीट मिलता है. डीजल का ऑन द अदर हैंड कंपैरिजन करेंगे तो 1 ग्राम जलेगा तो कम हीट मिलता है. तो दैट इज वाई पेट्रोल का जो कार होता है उसका पिकअप ज्यादा होता है, डीजल के कार का पिकअप उतना नहीं होता है. सो दिस इज रिलेटेड टू इंटेंसिव एक्सटेंसिव. थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एंट्रेंस एग्जाम इज कंसर्न. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम.
state या phase of a system, as many as two types are there: chemical states and physical states. Substance can have chemical states such as elements, compounds and mixtures, which we don't consider here in thermodynamics. And then we have 5 physical states, that is solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein, out of which plasma and Bose-Einstein are out of the scope, like beyond the scope of our syllabus. And we are going to see only 3 states, that is solid, liquid and gas. And we are just going to try and define this as far as thermodynamics is concerned. है ना, हमने state of a system का इधर ऐसा explanation दिया है. It is, or the state of a system, that is solid, liquid, gas, can be completely described by knowing, can be completely described by knowing the numerical value of minimum macroscopic properties such as pressure, temperature, volume, number of moles, etc. By knowing the numerical value of minimum macroscopic properties such as this of the system. I will explain what it means. मैंने कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं जैसे वाटर, करेक्ट ना, ये तो तीनों फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस. सपोज मैंने पूछा कि वाटर, एक आदमी बैठा है एक क्लासरूम में या समथिंग लाइक दैट, लैबोरेटरी में, और बाजू के एडजेसेंट क्लासरूम में वाटर रखा. मैंने पूछा कि वो जो बाजू में वाटर रखा है उसका फिजिकल स्टेट बताओ क्या है, बिना देखे इधर से ही बताओ क्या होगा, जस्ट समझने के लिए बताओ. तो ऑब्वियसली वो आदमी पूछेगा कि भाई उस वाटर के बारे में कुछ तो बताओ. तो मैं बताता हूँ कि वो वाटर जो है वो -4 डिग्री सेल्सियस पे रखा है. तो तुरंत वो आदमी बताएगा अच्छा तो फिर वो सॉलिड होना चाहिए. अब मैंने क्या बताया, -4 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर इस सिस्टम के अलग अलग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में से सिर्फ एक टेम्परेचर का नंबर में वैल्यू मैंने बताया, और उस आदमी ने मुझे क्या बताया, उसका फिजिकल स्टेट. तो फिजिकल स्टेट पता होने के लिए किसी भी सिस्टम के जो अलग अलग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें से कुछ एक का नंबर में वैल्यू मालूम होना जरूरी है. अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस अगर लेंगे है ना, इसका टेम्परेचर इसके लिए काफी है. टेम्परेचर से लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मालूम होना चाहिए, तो समझेगा कि वो लिक्विड है कि गैस है. ऐसा इसके लिए मिनिमम, ऐसा मिनिमम होना चाहिए. मिनिमम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, कभी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का नंबर में वैल्यू बता के भी फिजिकल स्टेट मालूम हो सकता है, कभी 2-3 बताना पड़ता है. सो इन शॉर्ट किसी भी सिस्टम का फिजिकल स्टेट समझने के लिए, मतलब वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस, उस सिस्टम के अलग अलग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में से कुछ एक का नंबर में वैल्यू मालूम होना जरूरी है. लेट अस लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, very important term in thermodynamics. It is called as a state function. Firstly, I'll give you the definition of a state function. It is a thermodynamic property, the value of which depends upon the value of which depends upon the initial state and the final state of the system and is independent of
the path selected to bring about the change This is the definition for the state function. Now I'll explain what it is. So state function क्या होता है? State function मतलब सारे जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फंक्शन कहते हैं. तभी तो ये कहा इट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब नया कुछ नहीं है, लेकिन ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ उसके इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं. इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है ना, मतलब इनिशियल स्टेट में फिजिकल स्टेट भी ले सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते. दे आर पाथ इंडिपेंडेंट. स्टेट फंक्शंस आर पाथ इंडिपेंडेंट होता है. तो जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम कंसीडर करता है, पाथ कंसीडर नहीं करता है, उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं. और ये जान लो, जो स्टेट फंक्शन नहीं है उसको कहेंगे पाथ फंक्शन है ना. इसका एग्जांपल कैन बी वर्क, करेक्ट, एंड हीट. ये दोनों भी पाथ फंक्शन है जो डिपेंड ऑन पाथ. ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ इन्विटेशन में भी कि हाउ पाथ वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ, हीट आल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ. तो ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है. बाकी स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स ऐसे आ सकते हैं, यहाँ पे दे रहा हूँ. ये जैसे डेल्टा टी, T2 माइनस T1 लिखा जाता है ना. डेल्टा P फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. ऐसे डेल्टा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. ऐसे डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी है ना. ये दिस इज इंटरनल एनर्जी. डेल्टा H मतलब एंथैल्पी, H2 माइनस H1 एक्सेट्रा. तो बेसिकली जिसको डेल्टा लगता है, ये जो डेल्टा है वो सारे स्टेट फंक्शंस है. याद रखना ये जो है वो कैपिटल डेल्टा है ना. डेल्टा डेल्टा मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज. इसको कैपिटल डेल्टा इसके लिए कहा क्योंकि ये स्मॉल डेल्टा है ना. सिर्फ डी लिख लेंगे. मैथ्स में आता है ना डी बाई डी एक्स, या तो ऐसे भी आता है, ये ज्यादातर फिजिक्स में आता है. ये इसका आता है इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज. Infinitesimally small change. What do you mean by infinitesimally small change? It is very 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 small change. Chemical thermodynamics में हम लोग small change ही देखते हैं, बहुत बड़े changes स्टडी नहीं करते हैं. और उससे भी छोटा change है infinitesimally small change. उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनता है छोटे इसका. ये समझना बहुत जरूरी है. सब स्टेट फंक्शन में लगेगा. सारे स्टेट फंक्शन उनको डेल्टा लगता है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस है वही लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा हमेशा. और वर्क और हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो पाथ फंक्शन है. दे डिपेंड ऑन पाथ. स्टेट फंक्शंस दे डोंट डिपेंड ऑन पाथ, दे डिपेंड ऑन योर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. The next very important term here is thermodynamic equilibrium, most frequently used. ये सारे टर्म्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आखिरी लेक्चर तक आपको लगेंगे. These are very important terms. Thermodynamic equilibrium का definition आता है. It is the state or stage in a chemical reaction where all the macroscopic properties such as pressure, temperature, volume, number of moles, etc. become constant. This word is important. Simultaneously. सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अगर एक साथ कांस्टेंट हो रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शन में अचानक से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जितने भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है सब कुछ एक साथ अगर कांस्टेंट हो गया तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, है ना. इट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. Now we are supposed to see the types of thermodynamic equilibrium. है ना, इसका एक टाइप्स बता रहा हूँ.
इसमें फर्स्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका डेफिनेशन आएगा अ सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स टेम्परेचर throughout remains, throughout the process remains constant। करेक्ट ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिस्टम is said to be in mechanical equilibrium when its pressure throughout the process remains constant। ये हो गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये दूसरा टाइप है। द थर्ड टाइप इज वेरी फेमस, इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। A system is said to be in chemical equilibrium when its chemical composition मतलब ही concentration या number of moles, chemical composition मतलब ही concentration या number of moles remains constant throughout, है ना, या throughout तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। Throughout remains constant। तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। वैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का और एक डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ स्टेज इन अ केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन वो डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जानते हैं लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनामिक्स रेट ऑफ द रिएक्शन कंसीडर करता नहीं है। तो थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन जब कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस तो उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एक साथ कांस्टेंट होते हैं। सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो थर्मल इक्विलिब्रियम, प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। दीज आर द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आपको ये सब कुछ आई होप समझा ही है और अच्छा लगा होगा तो डोंट forget to press the like button and please do subscribe my YouTube channel. Thank you.